Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing fine. Well, our today's topic is the cold desert Ladakh. Now, first of all, let me tell you about the origin of the word Ladakh. Ladakh is made up of two words, La meaning mountain and Dak meaning country. So these two words together, La and Dak, form the word Ladakh, meaning the country of the mountain passes. Well, Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. The Karakoram range in the north and the Zanskar mountains in the south enclose it. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. For example, the Gangri Glacier. Dras, one of the coldest inhabited places on earth, is located in Ladakh. लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है. ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में पड़ता है, मशरिकी साइड में. और कोराकोरम रेंज लद्दाख के शुमाल में है और ज़नस्कार माउंटेन्स लद्दाख के जुनूब में है. इन दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान, in between Karakoram range in the north and Zanskar mountains in the south, इनके दरमियान लद्दाख जो है वो एनक्लोज्ड है, इन दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान. लद्दाख से बहुत से दरिया फ्लो करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, और इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडस रिवर, दरियाई सिंध. Now altitude of Ladakh. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The climate in Ladakh is extremely cold and dry. The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The air in Ladakh is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. The day temperatures in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below minus 30 degrees Celsius. Just imagine, minus 30 degree Celsius. It is the night temperature during the summers there. It is freezing cold in the winters, and the temperatures may remain below minus 40 degrees centigrade for most of the time. During winters, there is freezing cold in Ladakh and the temperatures may remain below minus 40 degree centigrade for most of the time. As it lies in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall. There is very little rainfall in Ladakh, as low as 10 centimeter every year. बहुत कम बारिश होती है लद्दाख में, 10 सेंटीमीटर से भी कम सालाना बारिश होती है लद्दाख में. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. Freezing winds and burning hot sunlight.
is experienced in Ladakh. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. This is the climate of Ladakh. कि एक ही वक्त में आदमी को सनस्ट्रोक भी हो सकता है और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है. जो हिस्सा बॉडी का धूप में होगा वहाँ सनस्ट्रोक हो सकता है, और जो हिस्सा छाँव में होगा वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है. तो ये यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये बहुत हार्श है. बहुत ज़्यादा सर्दी भी होती है यहाँ पे, और सनलाइट जो है ये बर्निंग होती है, बर्निंग हॉट होती है, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है बड़ा थिन एयर है और सनलाइट इसलिए बहुत बर्निंग होती है यहाँ पे. लद्दाख को खपाचान भी कहते हैं, इसका एक और नाम है खपाचान. लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खपाचान विच मीन्स स्नो लैंड. इसका मतलब क्या है, स्नो लैंड. नाउ about flora and fauna of Ladakh. Due to high aridity, the vegetation is sparse. यहाँ पे कहीं कहीं ये vegetation होती है, दरख्त वगैरह कहीं कहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं. There are scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in the valleys. During the summers, fruit trees such as apples, apricots and walnuts bloom. During the summers, fruit trees such as apples, apricots and walnuts bloom. तो ये यहाँ पे दरख्त होते हैं, एक तो होते हैं ये willows and poplars, और यहाँ पे जो मेवेदार दरख्त होते हैं उनमें क्या क्या दरख्त होते हैं ज़्यादातर, एक तो एप्पल्स होते हैं और एप्रिकॉट्स होते हैं. एप्रिकॉट्स यहाँ के मशहूर हैं, ठीक है ना. एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये यहाँ पे समर में ब्लूम करते हैं. तो ये यहाँ के दरख्त होते हैं, और इसके अलावा कुछ झाड़ियाँ वगैरह भी होती हैं जो दूर दूर होती हैं. Several species of birds are sighted in Ladakh. In Ladakh, there you can see several species of birds such as robins, redstarts, Tibetan snowcock, raven and hoopoe. These are the common birds there. Robins, redstarts, Tibetan snowcock, raven and hoopoe. These are the common birds which can be sighted in Ladakh. Some of these are migratory birds. इनमें से कुछ परिंदे होते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो माइग्रेशन करते हैं, समर में वहाँ जाते हैं और विंटर में वहाँ से भाग जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं. तो इनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं वहाँ पे कुछ. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स. कौन कौन से एनिमल्स होते हैं वहाँ पे? यस, वाइल्ड गोट्स होती हैं वहाँ पे, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स. एक वहाँ पे जंगली कुत्ते होते हैं और जंगली भेड़ होते हैं और याक होते हैं. याक यहाँ का मशहूर जानवर है, ठीक है. और यहाँ पे स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स भी होते हैं. द एनिमल्स आर हियर टू प्रोवाइड द मिल्क, मीट, हाइड्स. मिल्क, मीट एंड हाइड्स. यहाँ पे जानवरों को किस लिए पाला जाता है? ज़्यादातर दूध के लिए और मीट के लिए और हाइड्स के लिए. उनके जो हाइड्स होते हैं, उनके चमड़े जो होते हैं, उनसे लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाते हैं, ठीक. याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर. याक यहाँ का जो जानवर है वो बहुत मुफीद है, वो बहुत फ़ायदेमंद जानवर है, बहुत यूज़फुल एनिमल है,
उसका जो मिल्क है उससे चीज़ बनाई जाती है और बटर भी उससे निकाला जाता है, ठीक। The hair of the sheep and goat is used to make woolens. Ladakhi people rear sheep and goat, and their wool is they are used to make woolens, ठीक है ना। उनसे जो ऊन हासिल किया जाता है उससे मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं और उस ऊन से मुख्तलिफ किस्म के स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, इस्तेमाल किया उसको, इसलिए वो शीप और गोट जो है वो पाले जाते हैं वहाँ पे। तो याक को दूध के लिए भी पाला जाता है ज़्यादातर, तो शीप और गोट्स को वूल के लिए पाला जाता है। अब यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में ज़रा जानकारी हासिल करते हैं। पीपल ऑफ लद्दाख, डू यू फाइंड any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? Now, let's know about the people of Ladakh. The people here are either Muslims or Buddhists. यहाँ दो मज़ाहिब के लोग रहते हैं लद्दाख में, या तो यहाँ पे मुस्लिम्स हैं और यहाँ पे बुद्धिस्ट्स हैं, ठीक। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gumpas. Some famous monasteries are Hamid Gumpa, Thiksay Gumpa, Shai Gumpa and Lama Yoro. लद्दाख में बहुत सी ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, इनके गुम्पा है वहाँ पे, इनको गुम्पा कहा जाता है, ठीक है। ये इनकी मोनेस्ट्रीज हैं बुद्धिस्ट्स की, तो ये यहाँ पे लद्दाख में मुख्तलिफ मकामात पे पाई जाती हैं ये गुम्पाज। तो इनमें से कुछ मशहूर गुम्पा भी हैं, जिनमें से हेमिस गुम्पा, थिक्से गुम्पा, शाई गुम्पा और लामा योरू, ये यहाँ के मशहूर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, बुद्धिस्ट गुम्पास हैं, ठीक है। यहाँ पे शाह हमदान के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी एक मस्जिद है यहाँ पे लद्दाख में बनाई है उन्होंने, उनके ज़माने से वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं। कारगिल में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है, लद्दाख में भी मुस्लिम्स हैं, बहुत से विलेजेस हैं मुस्लिम्स के, और बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे हैं बहुत सारे, और कारगिल जो है लद्दाख का हिस्सा, तो वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक। इन द समर season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, bananas, peas and beans and turnip. Let me repeat. In the summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip. The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hard working. Ladakhi women are very hard working. They work not only in the house and fields, but also manage small business and shops. Ladakhi women not only work in the house and fields, but also manage small businesses and shops. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by road and air. Ladakh is the capital, Leh is the capital of Ladakh, which is well connected by road and air. The National Highway 1A connects Leh to Kashmir. The national highway which connects Leh to Kashmir is known as Highway 1A. It connects Leh with Kashmir Valley through the Zojila Pass. Another highway which connects Ladakh with Manali, Himachal Pradesh. That is Leh Manali Highway. Leh Highway crosses 4 passes. Leh Manali Highway crosses 4 passes. Rohtangla, Baralachala, Langalachala and Tanglangla.
The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. So this is Leh Manali highway, which connects Leh with Himachal Pradesh. Tourism is the main activity, with several tourists streaming in from within India and abroad. Tourism is a major activity with several tourists streaming in Ladakh from within India and abroad. Visitors to the Gompas, these tourists visit to the Gompas, treks to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festivals are important activities of the tourists. Life of people is undergoing change due to modernization, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature. They are used with due to scarcity of resources like water and fuel. The Ladakhi people are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. So this was about the cold desert Ladakh. Now let me ask you some questions. Question for you in the textbook is that name the trees that grow in Ladakh. Name the trees that grow in Ladakh. Yes, the trees that grow in Ladakh, groves of willows and poplars are seen in the valleys. Willows and poplars, they grow in valleys in Ladakh. Fruit trees such as apples, apricots and walnuts also bloom in Ladakh. So these trees grow in Ladakh. Willows, poplars and fruit trees like apples, apricots and walnuts. These are the trees that grow in Ladakh. Now next question, some of the Buddhist monasteries of Ladakh. Name some of the Buddhist monasteries of Ladakh. Yes, some of the famous Buddhist monasteries of Ladakh are Hamid Gumpa, Thikse Gumpa, Shai Gumpa and Lama Yoru. So that was about the cold desert Ladakh. With this, I take your leave. Thank you very much and goodbye.